Hello aspirants, welcome to Target UPSC. Today we are starting an important series that is Polity between the lines. The reason we are starting this series is because LAXMIKANT में कुछ ऐसे points है जो हमेशा students भूलते हैं and there is always confusion and students make mistake at these points. तो hopefully you find this series helpful. अगर आपको पसंद आता है तो subscribe to the YouTube channel. To start with, एक important topic है हमारे LAXMIKANT में with respect to Lieutenant Governor and the Union Territory of Delhi. Usually the question is who appoints the Chief Minister of Delhi. Most of the students would give answer as Lieutenant Governor, but the answer is President of India. यहाँ confusion है, so make sure ये point clear रहने दीजिए कि the Chief Minister of Delhi is appointed by President. Parliamentary privileges, आप सबको पता है, these are special rights and immunity provided to members of Parliament. But आपको ये भी पता चाहिए, though President is part of Parliament of India, he does not enjoy any parliamentary privileges. But on the other side, whenever Attorney General of India takes part in any parliamentary proceedings, he enjoys parliamentary privileges. तो parliamentary privilege के बारे में ये important fact बहुत important है. But you have to tell us in the comment section parliamentary privileges का article कौन सा है. If you know, write down in the comment section. आज हम राज्यसभा related दो important terms देखेंगे. First is the members of राज्यसभा का term जो है वो constitution ने नहीं fix किया है, but was fixed by parliament through representation of people's act. And second is there is no reservation in राज्यसभा. जैसे लोकसभा में SC and ST के लिए रिजर्वेशन है, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है. So make sure ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए. Separate electorate was first time introduced for Muslims through 1909 Act. But आपको ये भी पता चाहिए that separate electorate was extended through Government of India Act 1919 to 6 Christians, Anglo-Indians and Europeans. And यही आगे फॉरवर्ड किया गया through Government of India Act 1935 to women, depressed class and laborers. जब भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स लेजिस्लेचर इज डन थ्रू टू हाउसेस. फर्स्ट इज अपर हाउस विच इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस विच इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and this was further extended to provinces through 1935 Act. And second important आपको पता चाहिए, जब bicameralism इंट्रोड्यूस किया गया था, अपर हाउस दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट में सिर्फ मेल मेंबर्स अलाउड थे. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. होपफुली ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में आपने बहुत बार लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ा होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन इज पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बट ऑन द अदर साइड जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंस इज पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. बट जब पेंशन की बात आती है इट इज पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट जजेस. एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस. इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज में होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्शन कमीशन जो हमेशा स्टूडेंट्स भूलते हैं. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. सेकंड इज इट डज नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स और नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए that election commissioners after retirement are not debarred from any government jobs. Now you have to tell me in the comment section what is the term of office of election commissioners and secondly do they have any quasi judicial power. आप सबको पता है कि president is removed through impeachment process through special majority. But क्या आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए there is no impeachment procedure and constitution has not laid down any grounds for removal of vice president. So what is the process of removal of vice president? For removal of vice president, what we need is a resolution passed by majority of all the then members of Rajya Sabha and it has to be agreed by other house that is Lok Sabha. But you should know that no resolution can be put in Rajya Sabha until a 14-day notice is given. इस टाइप के majority को हम क्या बोलते हैं? Effective majority बोलते हैं, though it is not mentioned in constitution. And effective majority is also required to remove speaker, deputy speaker या deputy chairman. सबको remove करने के लिए कौन से type of majority is effective majority? That is majority of the 50% of the effective strength of the house. And how do we calculate effective strength? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट जितने हैं उसको रिमूव करने के बाद जो भी स्ट्रेंथ रहती है हाउस की उसका 50% मेजॉरिटी लगती है. दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा स्टूडेंट्स भूलते हैं. फर्स्ट इज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू एन एक्ट. बट ऑन द अदर साइड जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका नंबर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता चाहिए दैट पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुडिशियल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट कैन नॉट curtail it. But last and most important thing is the constitution declared Delhi as seat of Supreme Court, but it also authorizes the Chief Justice of India to appoint other place or places as seat of Supreme Court, but this has to be done with the prior approval of president. तो ये 3-4 important facts about Supreme Court and High Court आपको पता चाहिए. And comment section में ये बताइए कि who is going to be the first woman Chief Justice of India. स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा स्टूडेंट्स भूलते हैं. फर्स्ट इज द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, whereas डिप्टी स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय स्पीकर. नेक्स्ट इज जब भी रिजाइन करना होता है स्पीकर को, ही राइट्स टू डिप्टी स्पीकर एंड नॉट टू प्रेसिडेंट. वेरेवर डिप्टी स्पीकर हैज टू रिजाइन ही राइट्स टू स्पीकर. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर डू नॉट टेक एनी स्पेशल ओथ व्हेनेवर दे आर इलेक्टेड टू their respective post. And last and most important thing is the salary of speaker, deputy speaker is charged on consolidated fund of India and is decided by parliament. But tell me in the comment section who conducts the floor test of newly elected Lok Sabha. The right answer would get special rewards from Target UPSC. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे टर्म्स है जो सिर्फ मेंशन किए गए हैं बट डिफाइन नहीं है. ऐसे टर्म्स के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जुडिशियल रिव्यू, नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी, थर्ड इज मार्शल लॉ, नेक्स्ट इज माइनॉरिटीज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे टर्म्स मेंशन्ड है पर डिफाइंड नहीं है. बट ऑन द अदर साइड टर्म्स सच एज फेडरल एंड बजट आर नॉट इवन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये याद में रखिए. पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि वेदर स्टेट एंड लॉ आर दे मेंशन्ड और मेंशन्ड एंड डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. State Human Rights Commission and State Public Service Commission, इनके members are appointed by governor, but they can be only removed by president. But on the other side, जो state election commissioners होते हैं, they can be removed in a similar manner as the judge of high court. तो ये जानना जरूरी है. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है और कौन रिमूव करता है. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू writs only for the enforcement of fundamental rights, whereas high courts can issue writ not only for enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. Secondly, the parliament can confer on the Supreme Court the power to issue writs for other purposes also. Next important point with respect to issuing of writs आपको पता चाहिए. Supreme Court has a wider jurisdiction and it cannot refuse to exercise its writs jurisdiction. On the other hand, High Court has a limited territorial jurisdiction with respect to issuing of writs and the power is discretionary. Hope you get the difference between High Court and Supreme Court with respect to issuing of writs. Secondly, joint sitting के बारे में कुछ important facts आपको पता चाहिए. First is provision of joint sitting was taken from Government of India Act 1935. Secondly, joint sitting is only applicable to ordinary bill and finance bill and it is not applicable to money bill and constitutional bill. Third important fact is speaker presides over a joint sitting and in his absence deputy speaker presides. अगर deputy speaker भी absent है तो deputy chairman. पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो हु प्रिसाइड्स एंड हु नॉमिनेट्स दिस मेंबर टू प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग. You should know that कि joint sitting is summoned by president and not by speaker. Secondly, joint sitting is governed by the rules of Lok Sabha and not Rajya Sabha. Third is the quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total members of the two houses. And last and most important thing is the disputed bill is passed through simple majority. That is majority of the total members of both the houses present and voting in the joint sitting. कुछ important facts about writs जो हमेशा students भूलते हैं. First is the writ of habeas corpus can be issued not only against public officials but also private officials. This is the only writ which can be issued against private individual. Next is the writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and it cannot be issued against administrative authority, legislative bodies or private individual. Next is quoranto के बारे में पता चाहिए. It can be issued only against public office of permanent character created either by statute or by constitution. It cannot be issued against any ministerial office or private office. Another important fact आपको पता चाहिए that is habeas corpus, mandamus, prohibition and certiorari can only be sought by aggrieved person, whereas quoranto can be sought by any interested person. Mandamus के बारे में पता चाहिए. It can be issued against any public body, a corporation, inferior court, tribunal or government for the same purpose. But you should know that it cannot be issued against president, governor and chief justice of high court functioning in judicial capacity.
आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी imposed on states whenever there is failure of constitutional machinery under Article 356. But you should know that Article 356 is not applicable to union territories. लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में लगाना है, it is based on Article 239AB, which says whenever the administration of Delhi cannot be carried out according to Article 239AA, then president, based on the reports of Lieutenant Governor or central government, can impose president rule in Delhi. Similarly, there is a different act based on which president rule is imposed in Pondicherry. You have to tell me in the comment section कि Pondicherry में अगर president rule लगाना है तो कौन से act के basis पे लगाते हैं. So some of the important facts with respect to state legislative council. First is the maximum and minimum strength of state legislative council is decided by constitution. The maximum strength can be 1/3 of the state legislative assembly and minimum strength can be 40. But the actual size is fixed by the parliament. Range is decided by constitution, but the actual size of state legislative council is decided by parliament. Secondly, for formation of state legislative council, the state legislative assembly has to pass a resolution by special majority and it has to be passed by parliament by simple majority. Third important fact is the chairman of the council is elected compared to Rajya Sabha जहां vice president is the chairman. State legislative council में chairman elected होता है. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अबॉलिशिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेकेंडली कौन से स्टेट में प्रेजेंटली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शनिंग है. Constitution has prescribed different age criteria for different constitutional posts. सबसे पहले president should have completed 35 years of age and similarly vice president के लिए भी ये 35 years ही है. When it comes to MPs of Rajya Sabha, the minimum age should be 30 years, whereas लोक सभा के लिए ये age है 25 years. On a similar line, अगर आपको state legislative council में elect होना है तो आपकी age minimum 30 years चाहिए and state legislative assembly में 25 years चाहिए. जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज की बात करते हो बोथ एट अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 21 ईयर्स. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा एंड सेकेंडली व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर गवर्नर. आज हम 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो स्टूडेंट्स हमेशा भूलते हैं. First is who decides whether a central law or state law would be applicable to schedule areas which are under 5th schedule. तो ये डिसाइड करता है गवर्नर एंड नॉट प्रेसिडेंट. अंडर 6th शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज आते हैं उसमें आसाम में गवर्नर डिसाइड्स फॉर बोथ सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, बट द रिमेनिंग 3 स्टेट्स विच आर मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, उसमें गवर्नर डिसाइड्स फॉर स्टेट लॉ एंड प्रेसिडेंट डिसाइड फॉर parliamentary law whether they would be applicable to tribal area. तो ये एक important चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज शेड्यूल एरियाज का रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन इज डन बाय प्रेसिडेंट, बट जो ट्राइबल एरियाज आते हैं 6th शेड्यूल के अंडर उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड बाय गवर्नर एंड नॉट प्रेसिडेंट. तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. होपफुली ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पसंद आया होगा. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैज शेड्यूल एरियाज अंडर 5th शेड्यूल. आपको आईपीसी एंड सीआरपीसी के बारे में डिफरेंस पता चाहिए. बेसिकली बोथ दिस लॉ गवर्न क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड इज अ प्रिंसिपल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया दैट डिफाइंस द क्राइम. सेकेंडली इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ क्रिमिनल एंड एक्शनेबल रॉन्ग्स. तो ये आईपीसी क्या करता है, डिफाइन करता है क्राइम को एंड पनिशमेंट डिफाइन करता है फॉर ऑल द क्राइम्स. बट ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974 इज अ प्रोसीजरल लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉर डिटेल प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट अंडर पीनल लॉ. तो क्या डिटेल प्रोसीजर होनी चाहिए इफ यू वांट टू अरेस्ट समवन, इफ यू वांट टू प्रोसिक्यूट समवन, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए बाय पुलिस, बाय जुडिशरी. तो ये सारा डिफाइंड सीआरपीसी में है. तो ये डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. You have to tell me in the comment section. Recently, Government of India established a committee to reform CRPC. Who is the head of that committee? First is what is the difference between civil case and criminal case? Civil case is between two private individuals, whereas in criminal case one of the party is state and other is a private individual. Secondly, the burden of proof in civil cases is on individual, that is plaintiff, but on the other hand the burden of proof in criminal cases is on the government. To give you an example, civil cases के example is with respect to breach of contract या property dispute, but on the other hand criminal cases के example is with respect to murder हो गया, grievous injuries हो गया या burglary हो गया. आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 के बीच का डिफरेंस देखेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 फोकसेस ऑन अलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल, बट इट डज नॉट लुक इनटू अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बिकॉज इट इज अंडर 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Secondly, it has provisions with respect to maintaining electoral roll for Lok Sabha, State Assembly and State Council. Third is President derives power
to delimit constituency after consulting Election Commission of India from Representation of Peoples Act 1950. Whereas Representation of Peoples Act 1951 focuses on actual conduct of election, so it looks into qualification and disqualification of MPs and MLAs. Secondly, notification of General Assembly. Third is conduct of election, dispute regarding election, corrupt practices and electoral offences, registration of political parties, and last and most important is it also defines the term of Rajya Sabha members. So ये difference आपको पता चाहिए, where Representation of Peoples Act 1950 focuses on all the activities before the election, and Representation of Peoples Act 1951 focuses on actual conduct of election and post-election conflicts. जब भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जानना बहुत जरूरी है. So according to Pitt's India Act 1784, the functions of East India Company was divided into two parts. First is commercial part, which was looked after by Court of Directors, and second was political function, which was looked by Board of Control. इस टाइप ऑफ सिस्टम को डबल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, where the commercial function was looked after by Court of Directors and political function was looked after by Board of Control. So this system of double government came through Pitt's India Act 1784 and it was abolished through Government of India Act 1858. So basically डायरकी means what? So basically डायरकी मतलब जो provincial subjects थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. First is transferred subjects and next is reserved subjects. Transfer subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers who were responsible for legislative council. तो transfer subjects में दो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था with the help of ministers. These ministers were responsible for legislative council, and on the other hand reserved subjects were those subjects which were administered by the governor by his executive council without being responsible to provisional legislative council. तो ये आपको पता चाहिए कि reserved subject में there was no accountability with respect to actions taken by governor, but transfer subjects में governor had to take decisions with the aid of ministers. तो ये difference आपको पता चाहिए. Secondly, diarchy was initially introduced only in the provinces through 1919 Act, and in 1935 it was abolished at the provinces but it was introduced at the central level. तो ये आपको difference पता चाहिए था with respect to diarchy. तो ये कुछ important facts about diarchy आपको पता चाहिए with respect to historical importance.